Welcome to Vision India Forum. Let me first of all thank Dr. Prakash Singh, the father of police reforms. Father and mother, I think he encompasses all aspects of police reforms. Because he's somebody who, after 10 years long battle post his retirement, got the Supreme Court directives. He got the Supreme Court directives to ensure that the police reforms take effect at the state level, and 6 directives are issued by the Supreme Court. How that has played, Kulasa Sahab, namaskar. नमस्कार नमस्कार भारत सरकार के एक बहुत ही नामचीन व्यक्तित्व, इस विषय से इनका ऐसा संबंध है जैसे सूरज और रोशनी का होता है। फगन सिंह कुलस्ते चेयरमैन है पार्लियामेंट कमेटी के, यूनियन मिनिस्टर, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट। कार्यक्रम 11 बजे शुरू होने वाला था, पर 11:15 बजे इनको पार्लियामेंट में जाना है, वजह से चल रहा है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, नक्सलिज्म, LWE, इंसर्जेंसी, ये सारे जो विषय हैं, ये विषय इतने क्रिटिकल विषय हैं, देश की उन्नति में ये बाधक है। इधर काम घुमा लिया यार। हमारे साथ सृष्टिपाल वासुदेव भी हैं, जो फॉर्मर PCCF है, NK गोयल साहब, जिन्होंने टेलीकॉम क्षेत्र में 40 साल से वो काम किया है जो कुछ ही लोग, you can count on the fingertips. And then Professor NK Goyal was also president of CMAI. He's also the president of CMAI. We've got Rajkumar Chaudhary, former CMD NHPC. Rajkumar Chaudhary ji has a 40 years experience of handling public sector in troubled areas. Dr. Prakash Singh is no stranger to and doesn't need introduction, but I will start straight away with Sri Phagन सिंह कुलस्ते, जो रूरल डेवलपमेंट और स्टील दोनों देख चुके हैं, प्लस वो ऐसे क्षेत्र मांडला से आते हैं जो कि ट्राइबल, नक्सलिज्म, LWE, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनको ये he knows by the back of his hand, and he is going to take us through the claims of the government and the way forward with respect to curbing of the Naxal red terror and how do we move towards the rainbow times. Over to you, Sri Phagn Singh Kulaste. हाँ नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही ना? जी जी। हाँ, अभी जिस विषय में ये जो चर्चा हो रही, और विशेष तौर से मैं सभी मित्रों से कहना चाहता हूं कि हमारे गोयंका जी ने विशेषकर नक्सली क्षेत्र और ट्राइबल क्षेत्र नक्सलवादियों का हमारे गृह मंत्री और सरकार के प्रयास से बहुत सारे ऐसे जो इस क्षेत्र में जो शामिल थे, खासतौर से नौजवान, उनको उनके वापसी हुई है, मूलधारा से लोग जुड़े हैं। तो इस प्रकार का एक प्रकार का अभियान पूरे देश भर में चला और काफी लोग मूलधारा से जुड़े, पर जिससे अभियान में सरकार को सफलता मिली है, तो इसे सफलता के भी कई कारण हो सकते हैं। हमारे सामने मूलतः जो समस्याएं इस समय अनुभव में आ रहे हैं, वो है उनके एम्प्लॉयमेंट का। ये हमारे लिए एक चैलेंज बना हुआ है कि उनको हम मूलधारा से जोड़ना, वापसी कराना, और जिस प्रकार के अभी लाइन ऑर्डर में या जन जन क्षेत्रों में इस प्रकार की जो परिस्थितियां थी, तो बड़ी संख्या में लोग मूलधारा से जुड़े हैं, वापसी हुए हैं, उनका ट्रैवल हुआ, स्वेच्छा से लोग अपने हथियार सरेंडर किए। एक प्रश्न यही उठता है कि उनको अब एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना है, उनको रोजगार से जोड़ना, ये हमारे सामने एक विषय बहुत तेजी से चल रहा है। मैं अभी कुछ क्षेत्रों में गया था, विशेष तौर से बस्तर। अभी पिछले महीने मेरा प्रवास हुआ था। काफी लोग मुझे मिले भी जो सरेंडर हुए हैं, तो गेस्ट हाउस मिलने के लिए आए। तो उनने अपनी कुछ बातें उनने मुझे शेयर किया और कहा कि कुलस्ते जी, हमारे सामने
रोजगार की बड़ी कठिनाई है, और इसके लिए हम चाहते हैं सरकार हमको मदद करे, ये उनकी अपेक्षा थी। और वास्तव में जहां भी इस प्रकार की परिस्थिति है, मैं मंडला मध्य प्रदेश में भी देखा, हमारे मध्य प्रदेश इधर बालाघाट मंडला जो हमारे क्षेत्र है, वहां भी काफी बड़ी संख्या में लगभग हम वहां पर शून्यता की स्थिति में आ गए। सभी लोग लगभग वापसी हुए हैं, घर वापसी का कार्यक्रम उनका हुआ है, सरेंडर किए। ऐसे बस्तर के अंदर भी, छत्तीसगढ़ में भी वहाँ अनुभव आया। वहाँ तो मेरा व्यक्तिगत तौर से उन लोगों से बातचीत भी हुई, वो आए थे मिलने के लिए। अभी बीच में मेरा आंध्रा तेलंगाना की तरफ भी जाना हुआ, महाराष्ट्र में अभी 2 दिन पहले ही था। तो इस प्रकार का एक के जो लोगों के दिमाग में है, खास तौर से अभी तक इंसर्जेंसी के प्रभाव में थे, तो उनके लिए हमको एक बार विचार करना पड़ेगा, और सरकार भी इस दिशा में गंभीरता से विचार करे कि इनको कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना, ताकि इनकी रोजगार के लिए कौन सा अच्छा साधन हो सकता है। उनको किसी व्यवसाय से जोड़ सकते हैं, अगर पढ़े लिखे नौजवान बच्चे हैं तो हम नौकरी पेशा भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में क्यों ना हो, गवर्नमेंट साइड में भी हो, अगर इस प्रकार के कुछ काम उनको दिया जाए तो निश्चित तौर से ये हमारा अभियान की एक सफलता का बहुत बड़ा एक प्रकार का हमारा आधार बनेगा। तो इस प्रकार का अनुभव मुझे आया है, और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में हमने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। अभी सरकार ने ये बीबीजी राम एक जो बिल पास हुआ है, विकसित भारत का, आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना सरकार ने किया है, अभी गांवों में भी 125 डेज है उनको एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। और एग्रीकल्चर सेक्टर से जोड़ना, हमारे हार्टिकल्चर, हमारे वेटनरी, फिशरीज, ये 2-3 सेक्टर हैं जिनको सरकार ने प्राथमिकता दिया है। और मुझे लगता है कि इस दिशा में सरकार ने कुछ सब्सिडी का भी प्रोविजन किया है। जितने भी बेनिफिशरीज आएंगे इस प्रकार के, जो लोगों को जो सुविधाएं देंगे, रोजगार का अवसर मिलेगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलेगा, तो निश्चित तौर से इससे हमारा आय का एक साधन बढ़ेगा। और इससे उनको आय के संसाधन के साथ साथ लोगों को काम, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ये 2 चीजें जो मुझे लगता है कि अभी इससे काम तो हम, इससे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारा रूरल डिपार्टमेंट है, ये इसकी चिंता, और एग्रीकल्चर दोनों साइड में, दोनों डिपार्टमेंट के इसके जो प्राविधान हुए हैं, पर बहुत बड़ी संख्या में मूलतः जो अभी तक है जो अनुभव आए हैं, हमने बहुत लंबे समय से संघर्ष किया है। और उसमें विशेषकर ट्राइबल ट्राइबल क्षेत्रों में, ट्राइबल बहुत बड़ी संख्या में सिविलिज्म के साथ में उनका जो भी प्रभाव रहा, कारण क्या रहा वो तो मुझे पता नहीं, परंतु मैं अनुभव किया कि बड़ी संख्या में लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ उसमें। और आज है धीरे धीरे, आज वो बड़ी संख्या में वापस भी हुए हैं। तो यही एक प्रॉब्लम है कि उनके लिए हमको काम की लिए काम पे लगाना, अगर मूलधारा से जुड़े हैं तो उनको काम पे लगाना, ये 2 कारण जो मुझे समझ में आ रहा है। और इसलिए मैं आप सभी प्रतिभागियों को भी, जो हमारे पार्टिसिपेंट लोग हैं, जो मेरा अपना अनुभव आया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। और मैं गोयनका जी को बधाई देता हूँ कि वास्तव में ये 2 प्रमुख चीजें हमारे सामने हैं, एम्प्लॉयमेंट का, लोगों को काम पे लगाना और उनको मूलधारा से जोड़ना। सरकार ने एक पक्ष है इसको बहुत तेजी के साथ में सामने लेकर के आया, और लोगों ने हमारी बात को, सरकार की बात को स्वीकार भी किया। परंतु दूसरा जो पक्ष है एम्प्लॉयमेंट का, वो हमारे लिए आज चैलेंज है। उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे सजेशंस भी आएंगे तो बहुत अच्छा है। और सरकार के लिए भी एक प्रकार का सजेशन हमारे काम पे आने वाले हैं, तो हम सरकार को भी कहेंगे इस बात के लिए। और इसलिए मैं आप सब साथियों को, मैं इस काम के लिए, विशेषकर गोयनका जी को, सभी पार्टिसिपेंट को भी बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि काफी अंतराल के बाद हम सबका मिलना हो रहा है इस विषय को लेकर। और इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत इस प्रारंभिक भाषण के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कुलस्ते जी,
बजट सत्र है, आपको अंदर पार्लियामेंट में जाना है, संसद में जाना है। इसलिए मैंने आपको शुरू में इनॉग्रल एड्रेस में रिक्वेस्ट किया, नहीं नहीं, क्योंकि चलिए लोगों चलिए। को 11 बजे पता है, लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं। हाँ, मेरे आपसे, क्योंकि आप स्टील, यू आर ऑल्सो द स्टील एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर। अब स्टील मतलब आपके अंडर में काफी सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियां रही, स्टील अथॉरिटी से लेकर RINL सब रहा आपके अंडर, और ऐसे क्षेत्रों में रहा जिन क्षेत्रों से नक्सल का एक अभिन्न एक वास्तव वास्तव है। अब इसके बाद रूरल डेवलपमेंट में भी आपने बहुत लंबा चौड़ा काम किया। आपके आने के बाद रूरल डेवलपमेंट पे कई सारे ऐसे इनिशिएटिव हुए, पर स्टेट लेवल में जो विच्छेद है, जो डिस्कनेक्ट है, उस कारण जो है सेंट्रल स्टेट का कोऑर्डिनेशन नहीं होने से ये जो रूरल गारंटी स्कीम और BGP राम की आप बात कर रहे हैं, ये राम कब अयोध्या पहुंचेंगे, इस पे एक अटकलें लगाई जा रही है। और ये अगर ना पहुंच पाए तो दिए जलेंगे कैसे? देखिए, इसको दिया तभी जल जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ा संकल्प है प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने लिया है कि 2047, और वास्तव में जिस गति से भारत आज आगे बढ़ रहा है, दुनिया के लोग देख रहे हैं। और यही हमारे लिए एक रामराज की कल्पना होगी कि देश में सभी लोग खुशहाल हो, सब स्वस्थ रहे, सब अच्छे आनंद की जीवन जिए, सबको काम मिल जाए, और जो मूलभूत सुविधाएं, बेसिक जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का लाभ हमारे भारतवासियों को मिल जाए। ये एक बहुत बड़ी कल्पना है। इसके लिए देखिए, आज रियल एस्टेट के अंदर भी देखें आप, बड़े बड़े लॉजिस्टिक के क्षेत्र में देखिए, हमारा कनेक्टिविटी को देखिए, चाहे टूरिज्म को आप देखिए, आज जिससे गति से आज भारत में ये काम आगे बढ़ रहे हैं। आप चाहे वो आप एयरपोर्ट देख लें, शिपिंग के क्षेत्र में देख लें, हाईवेज, रेलवे, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए, हमारे इस काम के दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा, भारत के लिए, और आज दुनिया भारत की तरफ देख रही, लॉजिस्टिक का क्षेत्र इतना बढ़ गया है। और हम इस दिशा को ही आगे बढ़ाएंगे तभी भारत आगे बढ़ने के लिए, आज पूरी दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं कि जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये आने वाला भविष्य हमारा बताएगा। और यही हमारी जो रामराज की कल्पना है, इसको हमको साकार करना है। तो निश्चित तौर से अयोध्या में भगवान राम तो विराजमान हो गए, पर इसी आधार पर लोगों को खुशहाली और रामराज की कल्पना, हमारे देश के लोगों को, भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में हम देखेंगे। हमारा ये 47 का जो सपना है, इसको हमको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और हमारे सामने और कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इसको हम मूवमेंट को आगे बढ़ाए हैं। आज जिससे गति से भारत आगे बढ़ रहा है, आज आप सब लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोगों ने भी स्वीकार किया कि मूलभूत सुविधाओं को हम, बेसिक जो चीजें हैं, जो देश की जनता की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को पूरा करते हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखें हमारे साथ में जैसे कंपनियां भी हैं, NHPC के फॉर्मर चेयरमैन हमारे साथ जुड़े हैं। NRL है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी, जिसको हाल फिलहाल में नवरत्न का दर्जा मिला। NTPC एक एक विशाल ऑर्गेनाइजेशन, देश का सम्मान जुड़ा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। ये आपके क्षेत्रों में माइनिंग का काफी काम करते हैं, जिन क्षेत्रों से आप आते हैं, और वहां माइनिंग के चक्कर में, और जो इनका पावर जनरेशन का काम है, कोल बेस्ड प्लांट्स हैं, माइनिंग एलोकेशंस हैं, माइनिंग डेवलपमेंट ऑपरेटर्स के साथ कोलाबोरेशंस हैं, इनके साथ में आगे जाके किस तरह से ये ऐसा काम करें जिससे कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है वहां की, उनको फायदा हो, नक्सल कम्युनिटी है उनको फायदा हो, कैसे इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाए, मुख्य धारा में जोड़ा जाए। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनियां जो है, उनका मैंडेट अलग होता है, उनके काम का तरीका अलग होता है। और पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो है, वो NTPC जैसी कंपनियां, NRL जैसी कंपनियां, ये काफी हद तक इस मिशन को हमारा आगे ले जा सकती है, ताकि ये वापस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, गरीबी के कारण, शोषण के कारण वापस ये नक्सलिज्म की तरफ ना मुड़ जाए, टेरर की तरफ ना मुड़ जाए, इंसर्जेंसी की तरफ ना मुड़ जाए।
देखिए, ये जो विषय आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि मैंने कहा कि जब मूल धारा में लोग जुड़ रहे हैं तो नौजवान हैं उनको काम देना पड़ेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो और चाहे हमारे सरकारी जो हमारे उपक्रम हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, कहीं भी हो, या सरकार के किसी योजना स्कीम से, जैसे रूलर का मैंने उल्लेख किया था, तो ये कहीं ना कहीं इनको काम पे लगाना ये हमारी प्राथमिकता होना ही चाहिए। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ट्राइबल क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में आज देखिए चाहे एनएमडीसी का भी काम हो, एनटीपीसी का भी हो, जो गवर्नमेंट के उपक्रम हैं, इनमें कहीं ना कहीं लोगों को आज एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उनको रोजगार देना पड़ेगा, ताकि सरकार की भी जिम्मेदारी है, हमारे सीपीएससी की भी जिम्मेदारी है, प्राइवेट सेक्टर के कंपनियों की भी जिम्मेदारी, सब मिलकर के देखिए, कुल मिलाकर के जब इस दिशा में हम विचार करेंगे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, आज उनको हमने इंसर्जेंसी से बाहर निकाल करके मूल धारा में जोड़े, तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी, तभी देश को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी और देश आगे बढ़ेगा। तो ये हमारी प्राथमिकता होना ही चाहिए, और इस प्राथमिकता के आधार पर जो हमने कमिटमेंट हमने किया है लोगों के साथ में, विशेषकर जो वापस हुए हैं, जो मूल धारा से जिनको हमने जोड़ा है, जो ऐसे संवेदनशील क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों से लोगों को मूल धारा में जोड़ना एक बहुत बड़ा चुनौती था, और इसीलिए उनके बारे में विचार करना हम सबकी जिम्मेदारी है, और सरकार इसको प्राथमिकता से लेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारे साथ जनरल कमुला राव भी जुड़ चुके हैं। ये हमारे साथ अब कई सालों से हमें गाइड कर रहे हैं। टॉप टॉप नेम्स इन दी डिफेंस फोर्सेस। जनरल के राव, गुड मॉर्निंग सर। Good morning to you, sir. मेजर जनरल अभय गुप्ता, 26/11। कुलस्ते साहब, मेजर जनरल अभय गुप्ता आपके साथ हैं। ये चलिए 26/11 के एनएसजी ऑपरेशन के चीफ हैं। जिस 26/11 को आज भी लोग भुना के खा रहे हैं, ये उनके अंडर में ही संदीप उन्नीकृष्णन को अशोक चक्र मिला। चलिए धन्यवाद। कुलस्ते साहब, हमारे साथ सृष्टिपाल वासुदेव है, जो प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रह चुके हैं। प्रोफेसर एजी अय्यर जुड़ चुके हैं, क्योंकि फॉरेस्ट के बिना ट्राइबल नक्सलिज्म आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे साथ प्रोफेसर एजी अय्यर है, जो जानते हैं कि कैसे एनर्जी, फॉरेस्ट से कैसे एनर्जी को निकाला जाए और अल्टीमेटली एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके ये नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी को रोजगार का प्रावधान मिले। कुलस्ते साहब, आपके साथ में बहुत कंपनियां जुड़ी थी जब आप मंत्री रहे स्टील के। ऐसी कुछ एक दो चीजें आप अगर हो सके तो बताएं, जो आपने इनिशिएट करी स्टील अथॉरिटी के साथ, जो आरआईएनएल के साथ, एनएमडीसी के साथ, मिकॉन के साथ, जो कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, भारत सरकार के उपक्रम है, इन्होंने किस तरह से आपके निर्देशानुसार अच्छा कार्य किया और उसका क्या परिणाम निकला? देखिए, एक तो हमारा जगदलपुर का हमारा आयरन ओर का एनएमडीसी का जो प्लांट था, इसको उसको इस्टेब्लिश कराना, ये लगभग निजी क्षेत्र को जाने ही वाला था, परंतु हमने इनिशिएटिव लेकर के उसको हमने गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र में रखते हुए उसको हमने टेकअप किया, और आज वो वर्किंग में आ गया, प्रोडक्शन हमारा शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों को हमने वहां पर रोजगार भी दिया है, तो आज बराबर वो कमीशनिंग होकर के वो काम अपना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के काम है जो सिक अवस्था में थे, प्रारंभिक अवस्था में, स्टार्ट भी हमारा ऑपरेशन भी शुरू नहीं हुआ था, मैंने उसको ऑपरेशन को शुरू कराए और आज पूरा उसको कमीशनिंग करके हम आज उस मुकाम पे पहुंचाया। दूसरा, आपको ध्यान होगा रायबरेली में जो हमारा इस्पात का वो जो रिंग बनता है, इस्पात हमारे रेलवे के जिस वो बनते हैं आपके व्हील, वो भी स्टार्ट नहीं हो पाया, कमीशनिंग नहीं हो पाया। हमने उसको भी कमीशनिंग, मैंने 2 बार मेरा व्यक्तिगत तौर से जाना हुआ, और मैंने जो हमारी फॉरेन कंपनी थी उनके साथ में कोलैबोरेशन था, और बाद में धीरे धीरे, क्योंकि कोविड में थोड़ा टाइम जरूर लगा उस समय, परंतु हमने इसके बाद भी उसको हमने स्टार्ट किया बरेली में। कुछ माइनिंग के क्षेत्र जो आपको पता होगा कि हमारे आरएनएल बिल्कुल सिक अवस्था में था, हमने उसको भी हमने थोड़ा हीटअप किया और उसका प्रोडक्शन हमने बढ़ा दिया।
ऐसे कई उदाहरण माइनिंग के क्षेत्र में, जहां पर परमिशन, खास तौर से जैसे अभी फॉरेस्ट का जो मामला, हमारे डीजीपी साहब हैं, डायरेक्टर डीजी फॉरेस्ट है, जो रिटायर हो गए हैं, उनको भी पता होगा कि हमने परमिशन के कारण, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में भी, वहां भी ये परिस्थितियां आई और वो हम उसको आगे बढ़ाने में काफी विलंब हुआ। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मैंने पीछे लग कर के इस प्रकार के माइनिंग के क्षेत्र में जो गवर्नमेंट के हमारे पीएससी थे उनको हमने दिया, और उसमें जो हमारे ही माइनिंग थे उनको हमने पूरा माइनिंग के क्षेत्र में निरंतर हमने आगे बढ़ाया। हमारे मध्य प्रदेश का पन्ना आप देखिए, वो बिल्कुल क्लोज स्थिति में था, वो भी रिजर्व फॉरेस्ट और इसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट होने के कारण वो भी क्लोज हो गया था। पर मैंने व्यक्तिगत तौर से इनिशिएटिव लेकर, मेरा जाना हुआ सारा मैप और बाकी जितने भी बैठकें हमने की, और इसके कारण आज पन्ना का जो हीरा खदान है उसको भी हमने फिर कंटिन्यू किया और आज ऑपरेशन में है, चल रहा है, और इसका माइनिंग भी शुरू हुआ है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो मैं बता सकता हूं आपको। तमिलनाडु का आप देखिए, तमिलनाडु के अंदर हमारा एक बिल्कुल सिक अवस्था में था, वहां प्रोडक्शन बंद हो गया था, हमने उसको नए इनिशिएटिव, नए एनर्जी के साथ में हमने उस प्लांट को भी हमने शुरू किया, और आज स्टील का जो एनर्जी का जितना उपयोग करते हैं, और आप देखेंगे तो पर्यावरण के दृष्टि से भी हमने जितना भी वहां पर हमने शुरू किया है और उसको हमने स्टार्ट करा दिया। ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर हमने थोड़ा इनिशिएटिव लेकर के इन चीजों को आगे बढ़ाया है। तो मेरा जितना समय रहा, मैंने परिश्रम करके कई ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हमारे कुछ क्षेत्र हैं जहां बिल्कुल सिक अवस्था में भी थे, जैसे आज भिलाई को देखें आप, वहां पर हमारा जो लोकल एक है, अ, हमारा जो जितने भी रॉ मटेरियल होता है उनको डिसमेंटल करने का काम वो करते थे, हमने उनको भी हमने शुरू किया और नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। और आपको ध्यान होगा, पीआईएल जब हम इसको लागू किए तो आज देश में पहचान हुई, आज उसकी एक्टिविटी बढ़ी है और बहुत ज्यादा हमारा इस क्षेत्र को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। तो कई ऐसे अनुभव आए हैं, और इसलिए मैं आपको यही कुछ जो मेरे दो संज्ञान में। चीजें मेरे जहन में आती है। दो चीजें जहन में आती है। एक तो जो निजी निजी जो उद्योग है, प्राइवेट संस्थाएं हैं, इनके ऊपर मैं, देखिए ये विषय, मैं कभी भी किसी भी तरह का कंट्रोवर्सी या कोई भी तरह का आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाता हूं अपने कार्यक्रमों में। ये आपको पता है, हम अच्छी चीजों को निकालते हैं, सरकार के साथ जुड़ के कुछ आगे बढ़ते हैं। भास्कर ज्योति महंता, one of the topmost names in insurgency curbing in the northeast, the former DGP of Assam, he has also joined us. Bhaskar da, namaskar. Now we will also request you to tell us, companies like Adani, मैं सीधा नाम ले रहा हूं क्योंकि मेरा कोई व्यक्तिगत इनसे दुश्मनी नहीं है, और हमारे साथ प्रोफेसर अय्यर है जो अदानी के रिसर्च स्कॉलर है, और उनकी आवाज बिना माइक के भी पहुंच जाती है हर जगह। तो ऐसे महान लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कुलस्ते साहब, ये लैंड ग्रैबिंग, प्राइवेट संस्थाओं का जो उत्पात है, इन चीजों को कैसे सरकार साथ में लेके आगे बढ़ेगी? क्योंकि कैपिटलिज्म विज़ ग्रोथ, रेनबो टाइम्स, ये दोनों का एक बैलेंस, एक समन्वय कैसे किया जाए, ये आपसे अच्छा कौन जानता है, क्योंकि आप तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ा अगर किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाना है या उनको कभी जैसे माइनिंग का भी कोई अगर जरूरत है, तो सबसे पहले हमको लैंड लैंड एक्विजिशन में हमारे सामने कई चैलेंजेस आते हैं। फिर उनके साथ में जो अफेक्टेड हैं, ऐसे परिवार हैं, उनके लिए रोजगार और कंपनसेशन, ये चीजें बहुत जरूरत है। और इसके साथ साथ जब हम अगर किसी कंपनी को हमने इनवाइट किया है, तो उनके लिए कनेक्टिविटी, रोड, पावर, वाटर, और जो थोड़े बहुत एग्जम्पशन उनको हम दे सकते हैं वो देना चाहिए। क्योंकि आज जो अनुभव आए हैं, देखिए इसमें हमारा केवल इतना है, मैं तो इसको भी मैंने स्ट्रीम लाइन में किया था कि ज्यादा से ज्यादा हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, कंपनसेशन टाइम लिमिट के अंदर हो जाए, और उनको
जो अफेक्टेड परिवार है उनको सही समय में और सही मुआवजा जो मैक्सिमम हो सकता है उस आधार पे, और जो इंडस्ट्रीज हैं, उद्योग हैं, माइनिंग है, जो भी कंपनियां काम करती हैं उनको हमको बेसिक जो जरूरत है देश के अंदर, अगर किसी इंडस्ट्री को बढ़ाना है तो ये जिन्हें मैंने कहा कि हमारे लिए पर्यावरण, हमारे लिए पावर, वाटर और कनेक्टिविटी, रोड, ये जो बेसिक चीजें हैं किसी इंडस्ट्री को सरवाइव करने के लिए, उनको सारा क्लियरेंस के लिए ये, और हमने तय भी किया है, बहुत जगह कहा भी कि एक नोडल कोई ऑफिसर हो जो सारी फॉर्मेलिटी को पूरा कराए कम समय में, और हम उन कंपनियों को बिना किसी व्यवधान के हम आसान तरीके से उनको हम ये सारी फैसिलिटी जो उपलब्ध करा दें, सरकार की तरफ से क्लियरेंस हो जाए, तो निश्चित तौर से उद्योगों को और माइनिंग क्षेत्र को आगे बढ़ने में और समय पे उनका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ये मैंने अनुभव किया, इसके लिए हमने प्रयास किया देश के विभिन्न भागों में, चाहे राज्यों का हो। ये जरूर है कि केंद्र का, राज्य का समन्वय इसमें लेकर के होना चाहिए, दोनों का कोऑर्डिनेशन ठीक हो। जब तक कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा तो कंपनियां आगे बढ़ नहीं सकती, क्योंकि इसकी सारी फॉर्मेलिटीज हमको राज्य और केंद्र दोनों से हमारा संबंध है, और दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये कंपनियां आगे बढ़ सकती सीएसआर हैं। सीएसआर के माध्यम से, सीएसआर के माध्यम से बड़ा विकास किया जाता है। सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से बड़ा विकास किया जाता है। पेट्रोलियम मंत्रालय लास्ट ईयर ने अनाउंस किया था, पार्लियामेंट में इन्होंने रिप्लाई भी दिया कि 2% का मैंडेट है लेकिन हम 4% खर्च करते हैं। अब हरदीप पुरी जी ने बोला 4% खर्च करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि इन तरह की जगहों पर विकास हो सके। धर्मेंद्र प्रधान जब तक पेट्रोलियम मिनिस्टर थे तब तक उड़ीसा में काफी सीएसआर का पैसा लगा। जब वो चले गए तो उड़ीसा में आज की डेट में सीएसआर का जो खर्चा है, पेट्रोलियम कंपनीज का जो खर्चा है, वो दिखा जाता है जैसे बहुत गिरावट है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। एक कोऑर्डिनेशन, माइन, कोल, पावर, रूरल डेवलपमेंट, होम मिनिस्ट्री, ट्राइबल अफेयर्स, इनका कोऑर्डिनेशन, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को तो भूल ही चुके हैं। कैसे आप लोगों ने सोचा है? क्योंकि सब अपना अपना गेम चला रहे हैं, सब अपने विषय पे आगे बढ़ रहे हैं। किसी को पावर प्लांट लगाना है, किसी को कोल बेस्ड प्लांट लगाना है, किसी को सिक्वेस्ट्रेशन प्लांट लगाना है। अचानक बजट में सिक्वेस्ट्रेशन के लिए बजट आ गया। अब सोलर पैनल लगाने हैं, किसी को कोयला और निकालना है, किसी को जाके अमेरिका में बोलना है कि कोयला हम नहीं निकालते हैं, का उत्तर ले लेना। किसी किसी को पावर जनरेट करना है, किसी को माइनिंग करना है। तो अब ये सारा कोऑर्डिनेशन अलग अलग मंत्रालयों के बीच में कैसे होगा? क्योंकि बीच में पिसेगा, पिसेगा गरीब। लगा तो नहीं। हाँ हाँ, देख। बीच में ये सारे जो इतने मंत्रालय हैं, इनमें पिसेगा कौन? वो ट्राइबल, वो नक्सल, वो नॉर्थ ईस्ट का बच्चा, फैमिली, वो पिसेंगे अगर ये कोऑर्डिनेशन ना हो तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? क्योंकि आप तो खुद दो दो मंत्रालय देख रहे थे। देखिए, ये पहली बार देश में मोदी जी के आने के बाद सीएसआर को लोग जानते हैं सार्वजनिक तौर से, पब्लिकली। और ये जो 2% मैंडेटरी हमने किया है सरकार ने, तो आज देखिए, अगर हम जब स्वच्छता की बात करते हैं तो बहुत बड़ा अभियान है पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने देश में चलाया, कि हमारे शिक्षा के जितने भी विद्यालय हैं, प्राइमरी, आश्रम से लेकर के हमारे हायर सेकेंडरी तक जो विद्यालय हैं या जहां पर भवन है, एक तो हमने सभी कंपनियों को हमने कहा है कि कुछ कुछ एरिया या राज्य के कुछ भाग उनको हमने दिया। तो इस आधार पर एक तो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे बच्चियों के लिए जो स्वच्छता के क्षेत्र में, हमारे यहाँ शौचालय नहीं थे, क्या परेशानियां होती थी, एक अनुभव हमने ये किया। तो एक बहुत बड़ा उपयोग इसको लेकर के हमने किया। और आज देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में अभी जैसे कुछ एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई हुए, कुछ ब्लॉक्स हुए, तो इस प्रकार के क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में हमने सीएसआर का उपयोग है। जिन क्षेत्रों में विशेषकर सीएसआर के जैसे नॉर्म्स हैं कि भाई जहाँ कंपनियां हैं, उद्योग है, उनके अराउंड एरिया 25-30 किलोमीटर पर उस राज्य के अंदर भी कुछ भाग
उनमें भी कुछ हिस्सा जाना चाहिए ताकि हर सेक्टर को हम कवर कर सके। ये हमारे सामने जो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस दिखता है, हम इसको कैसे हम सीएसआर से कवर कर सकते हैं। थोड़े थोड़े सरकार करती है, परंतु जो 2% हमारा एक मैंडेटरी हमने जो फैसला किया सरकार ने उस आधार पे, और इसके कारण आज पूरे देश में सीएसआर का भी जितने हमारे जो प्राइवेट कंपनियां भी हैं, हमारे सरकार के उपक्रम हैं, ये सभी क्षेत्रों में जो जिनके पास इनकम है, आय के संसाधन हैं, हमारा सीएसआर में कितना हमको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट बेस्ड व्यवस्था है ये। और इसलिए जहां जहां पर जितना हमको प्रॉफिट हुआ उसका 2% हमने देश भर में अन्य क्षेत्रों में लगाया। और मैं बधाई देना चाहता हूं जितने कंपनियां, जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया, उनको स्वयं अनुभव आया होगा, क्योंकि उनके ही देखरेख में, उनका भी उसमें कुछ सुपरविजन रहता है। तो ये उनको भी आनंद आता होगा कि जब देश के विकास में, देश के लिए, हमारे ऐसे कमजोर क्षेत्रों के लिए, आपने कहा कि नक्सली है या प्रभावित क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा, आप देखिए इन क्षेत्रों को देखिए जहां पर इस प्रकार के आदिवासी क्षेत्र है, रूरल डिपार्टमेंट को हमने कवर किया। जैसे रूरल डिपार्टमेंट से हमने बाकी जो पहाड़ी क्षेत्र है पूर्वोत्तर में, हमने 100% उनको ग्रांट देते हैं एकदम पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो यूटी है, और 90% तो हमारा शेयर जाता ही है, 10% उनको नॉर्थ ईस्ट के लोगों को लगाना पड़ता है। ऐसे कुछ स्कीम्स हैं। आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में हेल्थ सेक्टर में भी कुछ हमारी कंपनियां हैं जिनने मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, इस प्रकार के हमारे हेल्थ सेक्टर को भी प्रमोट किया है, उनके लिए एम्बुलेंस की सेवाएं दिए, स्पेशल अलग अलग प्रकार की व्यवस्था हुई है। तो ये बहुत बड़ा काम है इस लेकिन समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने मिनिस्टर साहब, इनिशिएटिव लिया है मिनिस्टर उसका साहब, लाभ जैसे हुआ है। जैसे 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 देखिए सीएसआर की अगर हम बात कर रहे हैं, बिफोर आई लेट यू गो, probably couple of interactions with the guests here. They are all high profile guests. General Huda has also joined us. He is the chief of the surgical strike. जिस सर्जिकल स्ट्राइक के कारण भारत की अस्मिता बढ़ी, उनके चीफ आपके साथ है। भास्कर ज्योति महंता आपके साथ है। प्रकाश सिंह आपके साथ है। अभय गुप्ता 26/11 के चीफ। जनरल के राव आपके साथ है। और प्रोफेसर अय्यर है। शिष्टिपाल वासुदेव है, एडिशनल सेक्रेटरी होम भी रह चुके। कुलस्ते साहब, इलेक्शन 135 ये कंपनीज एक्ट का है जिसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ, यहाँ तक कि हेरिटेज तक के लिए प्रावधान है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अगर नक्सल स्पेसिफिक, ट्राइबल स्पेसिफिक, नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक अगर कुछ प्रावधान अलग से कंपनीज एक्ट में कर दिया जाए, तो ये जो कंपनियां आंखों में धूल झोंक रही है सीएसआर के नाम पर, एनजीओ के साथ जो पैसा घूमता है, ये कम से कम थोड़ा तो अलाइनमेंट होगी। देखिए ये तो सरकार से कहना पड़ेगा। बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया है, मैं जरूर सरकार को कहूंगा कि इस पे कोई नीति बने और उस आधार पे आगे बढ़े, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को एकदम कह पाना हमारे लिए कठिन होता है। जब तक उसको कोई कानून नहीं बनेगा, एक्ट नहीं बनेगा, तब तक हम उस पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर सकते। और इसके कारण हम दोनों तरह के, एक तो कंपनियों को आमंत्रित करना, फिर उन पे एक प्रकार का ये करना, तो इसीलिए हम दोनों पक्ष से सामंजस्य बना करके क्या अच्छा बीच का रास्ता हो सकता है। उनको भी लगेगा कि अगर हमारे यहाँ उनका प्रोडक्शन हो रहा है, इनकम हो रहा है, और देश के हित में उनका क्या योगदान है, तो उस योगदान में उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो। ये हमको दोनों पक्ष से बातचीत करके कि उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि हम देश के हित में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, हमारी कंपनी का योगदान क्या हो सकता है, ये जरूरी है। मैं जरूर सरकार को सुझाव भी दूंगा और कहूंगा ये जो आपने सजेशन दिया है, खासतौर से बिल्कुल। ट्राइबल क्षेत्रों लेकिन के लिए, नक्सली क्षेत्रों के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए, वैसे सरकार ने अपने तरफ से जो इनिशिएटिव लिया है वो मैंने कहा कि हम 90% ग्रांट है, डोनर मिनिस्ट्री भी हमने बनाया, वो भी हमने देखा है। इसके पहले नॉर्थ ईस्ट क्या स्थिति थी वो लोग जानते हैं, परंतु मैंने देखा है, सरकार में काम किया है कि ये दो प्रमुख जो क्षेत्र हैं इनके बारे में मैंने व्यक्तिगत तौर से भी अनुभव किया, उन क्षेत्रों में जाकर के भी वहां की परिस्थितियों को भी मैंने देखा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडु, इन क्षेत्रों को तमिलनाडु की एक आगे बहुत बढ़ाना। बड़ी कंपनी, तमिलनाडु की इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनी, नाम में नहीं ले सकता, कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है और हमें तो उछालना नहीं है किसी को। आपके सानिध्य में ले आए, इफ इट इज कमिंग टू योर नॉलेज, यू कैन टेक इट टू द पार्लियामेंट वेर यू आर हेडेड फ्रॉम हियर। A company in South India, in Tamil Nadu, one of the top most public sector companies, spent a lot of money
shelling it out to NGOs in Calcutta. Now that money never went back to the areas they were designated for. तो ये जो टोकनिज्म है, ऑप्टिक्स है, हुडविंकिंग है, आई वॉश है, ये इसको बंद करें और अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत जरूरी है. आई थ्रो इट ओपन. प्रोफेसर एजी अय्यर, एनी सजेशंस, क्विक शॉर्ट सजेशंस और एनी क्वेश्चंस? नो, आई एम वेरी क्लियर कि आपने जो कहा ये सीएसआर का, इवन इन द, आपने पब्लिक सेक्टर की बात की पर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा. प्राइवेट सेक्टर के अंदर आधे से ज्यादा सीएसआर वो जो ओनर्स हैं उनकी बीवियां चला रही हैं फाउंडेशन के थ्रू. भाई ये हम आंख बंद करके वो बिल्ली 100 चूहे खा के हज को क्यों गई, इस पे सरकार खुल जाए. क्यों नहीं बोल सकती है? क्यों नहीं प्राइवेट सेक्टर को बोल सकती है कि इसको जरा आप प्रोफेशनलाइज करिए? भाई कौन से एनजीओ को देते हैं काम? मैं बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा. पूरा ढकोसला है प्राइवेट सेक्टर का सीएसआर. इस हाथ से उस हाथ ले और ले लिया वापस. बीच में रामादुराई इसको बंद कराइए. बीच में रामादुराई कमेटी ने जिनको हटा दिया गया एज ए चेयरमैन ऑफ एनएसडीए, उन्होंने 8% एलोकेशन किया था फॉर स्किल डेवलपमेंट. स्किल डेवलपमेंट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है सर. स्किल डेवलपमेंट साहब आपकी सरकार बैठी है, लेकिन अगर आपकी सरकार बैठी है, बीजेपी की सरकार बैठी है. सीएसआर भले ही लाई. सीएसआर जब लाए थे तो महेश्वर साहू जो गुजरात के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते हैं, हमारे मित्र हैं, एनआईटी रूरकेला के. जीसीएसआर है. हाँ, हमारे मित्र हैं. आप बताइए इसमें क्या हुआ? आधे ज्यादा प्राइवेट कंपनियां तो अपने पैसे इधर से उधर घुमा रही हैं. वो सबकी बीबियां बैठी हुई हैं उधर ऊपर. कम से कम इस सत्य को समझिए. कुलस्ते साहब एक सजेशन है, एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप लोग प्रावधान बना दीजिए. जैसे रामादोराई साहब ने स्किलिंग पे 8% ऑफ टोटल सीएसआर स्पेंड का प्रावधान सजेस्ट किया था. सैम पिट्रोडा ने टेलीकॉम ट्रेनिंग के लिए किया था. इस तरह से आप लोग कम से कम कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए करिए. हमारे साथ में और भी जैसे लोग हैं. एनीबडी एल्स हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू और सजेशन टू द ऑनरेबल फॉर्मर मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट कमेटी चेयरमैन ऑफ SC/ST? देखिए, मैं जरूर है आपके जितने सजेशंस है उसको भी आप रिकॉर्ड कीजिए. मैं जरूर है जो इन बिंदुओं पे अभी तक के जो विषय आए हैं, सुझाव आए हैं, आपका भी जरूर बड़ी कंपनियों के बारे में मैं सरकार से भी, देखिए मेरे यहाँ से जो मेरा कमेटी है उसके तरफ से हमने एक रिकमेंडेशन सरकार को हमने किया है कि प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां काम करते हैं उनको भी गवर्नमेंट के जो हमारे उपक्रम हैं, अंडरटेकिंग से CPSC है, जिस प्रकार का प्रावधान हम इन पे लागू करते हैं वो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, उनको भी उस पर शामिल करना चाहिए, ये हमने कहा है. और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में हम इनसे भी जो हमारी पब्लिक सेक्टर के जो काम करते हैं कंपनियां अलग अलग क्षेत्रों में, इसी प्रकार से प्राइवेट सेक्टर में भी वो काम करने वाली कंपनियों से जरूर हम सरकार के तरफ से कहेंगे कि इस प्रकार की, क्योंकि बहुत जगह ऐसे उदाहरण आए हैं, आप झारखंड में देखें कि जितने भी प्राइवेट कंपनियां काम करती है कितना एक प्रकार का शोषण भी लोगों का करते हैं, उनके साथ अन्याय भी होता है. ये चीजें अनुभव आए हैं और इसलिए मैंने सरकार को रिकमेंडेशन किया है. मैं अपने तरफ से तो पूरा प्रयास कर रहा हूं और मैं फिर कहूंगा कि हमारे सरकार के जो प्रमुख हैं अलग अलग जो इनको देखते हैं, वो मिनिस्ट्री को विशेषकर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे अलग अलग जो मंत्रालय हैं जिनके अधिकार क्षेत्र में आता है भास्कर ज्योति महंता हमारे साथ है, फॉर्मर DGP आसाम. इन्होंने एक कलर बैंड का भी एक अचीवमेंट किया था, मैं उतना याद नहीं आ रहा है क्योंकि पुलिस फोर्स में ये कलर जल्दी से दिया नहीं जाता है. इनकी स्टेट के ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज DGP द आसाम स्टेट पुलिस वाज कन्फर्ड दैट रिकॉग्निशन. भास्कर ज्योति महंता ने मुझे आज सुबह एक वीडियो भेजा, रेबेलियन रिज्यूवेल्ड. बहुत प्यारा वीडियो है नॉर्थ ईस्ट का, मैं सबको फॉरवर्ड करूंगा. ही इज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड इश्यूज ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज नुमालीगढ़ हमारे साथ जुड़ी हुई है. आसाम अकॉर्ड हुआ 1984-85 में, आसाम अकॉर्ड हुआ. उसके बाद बहुत सारे स्टेप्स भारत सरकार ने लिए. भास्कर ज्योति महंता जी, एनी सजेशंस टू द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, lovely northeastern states? Currently we are all focused on the chicken snake, but chicken snake is okay. What about the northeastern states? हाउस का क्या है?
Mr. Mahanta, are you there? Okay, कुलस्ते साहब, मानता हाँ, साहब का और आपको आपको मेरी मालूम मेरी एक बात और सुन चलिए। लीजिए, मेरी एक बहुत रिक्वेस्ट। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और हम इसको आगे लेके जाते हैं। जी, ठीक। Okay, now let me quickly bring in somebody who knows Naxalism as a subject. But, you know, he's written a few books. Authority on Police Reforms, Naxalism, Chandrababu Naidu, when he was being, you know, chased by the Naxals, threatened, life threatened by the Naxals, Dr. Prakash Singh, the father of police reforms, he's only 90 years old. But the kind of passion he drives is unprecedented and unparalleled. Prakash Uncle, over to you. 3 minutes, as then we again bring you in. Before I start, let me tell you, I have to go to the Supreme Court, so I would like to relieve it as soon as possible. I should be there in by 12:30 or so. So I would like to leave in another 20 minutes. Sure. So now about Naxalism, you see, let us recall that in 2009, Prime Minister Manmohan Singh declared it as the greatest threat to the internal security of the country. The movement was, in fact, at its peak in 2009 and 2010. Uh, During that period, about 223 districts of the country, spread over 20 states, were affected by the Naxal movement. That was the highest peak of the movement. Now, since in 2014, Modi government comes to power, and by that time, the number of districts affected had come down to 126. Since then, there has been a well-coordinated campaign to finish the Naxal menace. It may be recalled that earlier Mr. Chidambaram had launched what was then known as Operation Green Hunt. It was he who first deployed the Central Armed Police Forces to the Naxal affected states. And he predicted that the Naxal movement would be over within a couple of years. But that did not happen. Subsequently, Mr. Rajnath Singh also claimed that the Naxal movement was on a decline and that the movement would be over within a few years. But that also did not happen. It goes to the credit of Mr. Amit Shah that he announced that the Naxal movement would be eradicated by March 26. And it seems he is moving in that direction successfully because the government of India has been able to deal very devastating blows on the movement, and the movement has suffered considerable attrition in its ranks, and I mean, it's shattered. The movement has been shattered. The Maoist Liberation Guerrilla Army is has almost disintegrated. Among the major successes which the security forces had, they have been able to kill this several central committee members. Basavaraju, the general secretary, was liquidated. Hidma, their greatest military commander, has been killed. And recently, Patiram Maji was killed in the surrender forests of Jharkhand. So these have been major killings by the security forces in the recent past. And it is estimated that now, I mean, less than 10 districts, I mean, some people say 6 or 7 districts only are left, which are affected by the Naxal problem. And hardly 2 or 3 Central Committee and Politburo members are left who have yet to be accounted for. So the movement has been almost shattered and it is on its last legs. Now, what has contributed to the success of the movement? I mean, I will briefly mention 4 or 5 factors. Firstly, the political resolve was there. I mean, there was a determined political approach that the movement has to be liquidated, it has to be finished, it has to be disintegrated. And the message went down the states, and there was, as a follow-up, there was coordinated action was taken by the state police forces, and the forces really went out against the Maoist rebels, and they have achieved considerable measure of success. Now, their success is to be attributed to several new innovations which they did. One was establishing forward operating bases. I mean, they established bases, security forces camps right in the heart of the
in areas which were considered hotbeds of Naxalism in Abu Jumad, in the deepest interior areas of Bastar. They established their forward operating bases. Now, earlier, they used to just go out on a combing operation, do a combing, and then come back. But now they said they just entrenched themselves in those areas. And once they entrenched themselves in those areas, it was difficult for Naxals to survive. And now and then there were encounters in which the security forces got the upper hand. The security forces also got the upper hand because due to a number of factors. Firstly, they were given the latest weaponry. Then they were facilitated by drones, which gave them intelligence about the movement of the rebels. Several satellites were also there to give them intelligence about the movement of the rebels. Now, briefly, you can say the induction of technology that helped the security forces and a very aggressive approach in operations. Cobra battalions were there even earlier, but subsequently a number of, the different states raised their own forces out of from the local people. The Bastaria battalion and DRG and other forces. These forces were raised from the local talent, from the local youth. And these boys, they fought the Naxals on equal terms because they knew the terrain, they knew the language, they knew the area, they knew the people. So it was a battle on equal terms, you can say. Otherwise, the security forces from other parts of the country, they had some difficulty in acclimatizing or familiarizing themselves with to the terrain. Now, these fighters, these local fighters were very effective in operations against the Naxals. Now, all this has contributed to the success of the security forces operations, although security Sir, forces just a small query, because it all slips off my mind. Is CRPF alone, competent? Or if that was the case, we had specialized forces like Cobra, Greyhounds, who took charge, and there was an interstate coordination, which led to elimination of high-profile, Naxals like Virappan. So, what are your views going forward? Do we need a specialized task force, or not an SIT, specialized task force like STF, like the NSG? We have NSG chief 2611 with us here. No, I think CRP did a good job. And their Cobra battalions were very effective. And wherever Cobra went, the Naxals dreaded them. Another force which Naxals really dreaded were the Greyhounds of Greyhounds. The Greyhounds of Andhra Pradesh. I've seen them in action when I was deputed to conduct an inquiry into the assassination of Chandrababu Naidu. I saw the Greyhound force from close quarters, and I found them an excellent force. So Greyhounds have been very effective. And What was the difference in approach? and What it's a has been the totally difference in approach between Chidambaram? Because I met Chidambaram in 2010, and he told us the same thing that you just now told us. And after 2014, from 126 districts, today we are at 3. Going to be 0 by March as per the current Home Minister's statements and claims. What has been the difference in political approach? Because, politically, the regional factions are still existing. Karnataka, Tamil Nadu, Andhra, they are all under non-center, powered states. Both the chief ministers were clear in their objective, and to Chidambaram goes the credit that he initiated the first comprehensive move against Naxals by deputing Central Armed Police Forces in massive strength to all the states. That was the beginning. It was loosely known as Operation Green Hunt, though government never admitted that it was any operation like that. But somehow, in popular currency, it was known as Operation Green Hunt. That was the time when the operations were started, but I think the states were not really putting their heart into the operations, and the security forces were also their strategy was not that aggressive. They would, as I said, they would comb an area which is affected and then withdraw to their battalion headquarters. That was the strategy. So you may clear an area, but once you vacated that area, it was again in course of time filled up by the Naxals. And then the kind of technological support which the security forces got in the recent, 6, 7 years, that has been phenomenal.
And in terms of weaponry also, they have got much improved weaponry than was provided to them. So, I mean, better weaponry, better intelligence, better technological support, that has contributed to the success of the security forces operations. And So, I mean, fear, greed, apart from fear, security greed, forces, or a carrot stick, what works with these guys now? Is it just the stick? Is it just the fear? Or do we need to also balance it with some greed and carrots? देखिए you need a combination of factors. Security forces are there, but the surrender and rehabilitation policy, that was also a good attraction. That if you come out from your underground setup, this is what we will provide you. We will provide you land, we will provide you employment, we will ensure that you are protected, etc., etc. The surrender and rehabilitation policy of different state governments, that was also an inducement to come over ground. Then the development in the area. I mean, the opening up of schools, banks, more mobile towers, better roads, better infrastructure, hospitals, primary schools, all these things which, as they came, the tribals started getting the benefits of economic development. That was also a factor. So the socio-economic Uncle, recently, BRO was deployed by Amit Shah ji. BRO was deployed to create highways in Bastar and Dantewada. And these have been a big success stories in that region. Do you think the private sector, involvement through contractors should be dispensed with completely? I would not say it should be dispensed with, but you see, earlier also there were road construction programs, but the problem in earlier years was that the contractors would say कि साहब हम सड़क कैसे बनाएं, हमको सुरक्षा प्रदान करिए, हमसे वो पैसा मांगते हैं. अब हमारा अगर 10 करोड़ का ठेका है तो कहते हैं 4 करोड़ हमको दो. अब 4 करोड़ उनको दे देंगे तो हमारा हम कैसे सड़क कैसे बनाएंगे. See, all those problems were there with the contractors, but once they got better security, and once the environment improved, road construction has picked up. Otherwise, funds used to be allocated, but the roads would never come up because the contractors came up with all kinds of problems. So this was the problem. I mean, the BRO, this is Border Roads Organization. For the farmer vote bank, there is so much of work, the government does. They also have that direct subsidy, direct benefit transfers. For these Naxals, have you any of, because you were also member of that committee in 2010, which was headed by Devendranath Bandyopadhyay. This committee was, it also had members along with you. Mr. Ajit Doval was also a member in that committee for Yes, the yes. Naxal team. So आप लोगों ने क्या कुछ सजेशंस ऐसे किए हैं कि फाइनेंशियली इनको इंक्लूड कैसे किया जाए, क्यों ना इनके हाथ में कुछ पैसा दिया जाए, अदरवाइज ये बातें तो चलती रहेंगी. देखिए, उस कमेटी में बहुत सारे सजेशंस थे, उसका समरी देना तो बड़ा मुश्किल है, पर उस कमेटी में कुछ बातें ऐसी हम लोगों ने खोल के रखी जो सरकार, मतलब एक तो ये कहा गया कि द डेवलपमेंट पैराडाइम विच वी हैव फॉलोड सिंस इंडिपेंडेंस has been at the cost of I mean, the benefits of those development paradigm has not gone as much to the poorer classes or the needy classes or the deprived classes as to people who were already doing well. And there has been unequal distribution of wealth. I mean, the newly acquired wealth of the developing Indian economy, the wealth has not been distributed in a manner which could be called equitable. People who were in the upper rungs, they have cornered the fruits of development. Sir, I'll just share one small example with you. I had traveled to Raigad in Bihar, and there is a place called Mountain Man, जो इसके ऊपर पिक्चर बनी, दशरथ माझी, जिसने पहाड़ काट के सड़क बनाई थी. That is a folklore. That's a anecdote which people. There is a movie made on this. We have And I picture went to bani. his village. It's the same background: Jharkhand, Bihar, Naxal, infested areas. This man for 40 years, with his hands, is supposed, as per folklores, has created a highway, and the pictures are there with me. I've seen them. But the movie makers came, they exploited them, they went away. And even today, they don't have 2 times meal. The kids are still hungry there. Private sector या government से कुछ नहीं होगा. According to my experience, you have to transfer money into their account. That's it. देखिए, गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा इतना तो, स्वीपिंग स्टेटमेंट तो मैं नहीं दूंगा. गवर्नमेंट ने ही बहुत कुछ किया है.
पर जो ध्यान देने की बात यह है कि जैसे एक जो डर इस समय है कि ठीक है, माओइस्ट रेबिलियन तो हम क्रश कर देंगे, we would defeat the Maoists. We have liquidated their leadership. We have destroyed their, disintegrated their Central Committee. Their Politburo is fragmented. Everything is broken down for the Maoists. But the one big question which they are asking: will Maowadis be replaced by MOUwadis? आप समझे? मतलब माओवादी तो अभी तक थे, उनको तो हमने खत्म कर दिया, पर जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो बनाते हैं जिन कॉर्पोरेट ग्रुप से, कोई ऐसा तो नहीं कि एमओयू वादी अब उनकी जगह आ जाएंगे. So I mean there is a fear that the corporate groups will move into the areas which have been cleared of the Naxals, and they will be allowed to set up big companies. Now, setting up big companies sounds fine. We have to have development, but the what will be the social effects of that? I mean, that these needs to be investigated. And wherever you are causing massive displacement, you see, one of the biggest problems in the Naxal affected areas was that I mean, more than a million tribals were displaced. I mean, over a period of time. And in the initial stages, there was no problem of there was no plan to rehabilitate them or resettle them. The plan came much later. Meanwhile, I mean, thousands and thousands, every time some unit was established, would be displaced with some monetary compensation, and that money would disappear, would evaporate in a year or two, and then they had nowhere to go. And that is the time when they were approached by Naxals कि भाई तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं, तुम्हारे पास कोई जरिया माश नहीं है, तुम ऐसे घूम रहे हो, चलो हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम तुम्हें खाना हमारे once you become a Naxal, you will be entertained by the villagers, you will be fed by the villagers, and you will have a gun which will command respect. So a lot of tribals joined just like that because they were displaced as a result of deforestation caused by the corporate groups, and the Naxal ranks continued swelling because these people were unhappy with the government. So, and they found that the Naxals were offering them something. So that's how you see these things will have to be taken care of even after the Maoist rebellion is crushed. Because if the Maoist rebellion is being crushed, but I'm of the view that the Naxal ideology would still survive, and it may find a manifestation again in some form, a different form, if grievances are not properly addressed and the socio-economic problems continue. Yesterday, I was speaking to Mr. Sam Petroda, and he is a globetrotter. He knows how the world works. He explained to me how inequalities are increasing and deepening across the globe. Now, that calls for more sincere, serious, and prompt action from the government, because that will be fueling Naxalism, communism more so. Because, for example, in a city like Jamshedpur, now Jharkhand, which is the home of the Bhagwan Birsa Munda, 150th year celebrated last year on 15th November. I did a show with Arjun Munda, the former CM Jharkhand, and we discussed many facets around the tribal issues. That is the reason I called Shishtipal Vasudev today, former PCCF of Himachal Pradesh, because he knows the forest acts. He knows the issues of land grabbing. He knows he was telling me one day how the tribals, they were engaged into, farming in the woods. And then after deforesting, they used to move ahead because they had no other avenues of revenue. Now, in such situations, companies like Tata Steel, who are based out of Jharkhand, Jamshedpur, they have built beautiful airport. The talks are around the CM office to restart the airline operations between Bhubaneswar, Calcutta, and Jamshedpur. But what about the areas adjoining Jadugoda? What about the areas adjoining the Wildlife Forest Park? Go to the Wildlife Forest Park, just 30 kilometers from Jamshedpur. It is in a mess. Now, if that is what private companies have a vision of, I'm sorry, uncle. There is no way we can rely on private. The government has to take up the charge, and the money has to flow, because survival is about money. The limbic system will work only if money is there in the pocket. The girls, the women, the children, they need food to eat. And that can only possible not through these policy dialogues, but only through direct transfer. And because you have to leave probably 3 more minutes. No, I think we have covered most of the things. As I said, governance has also improved in these areas. What we have to take care of now, you see, now let us hope that the Maoist rebellion is crushed,
and destroyed by the end of March this year. Now, what next? What next is one, you see, we have to strike a balance between the tribal way of life and development. Please remember that the tribal, I remember some interactions which I had with the tribals. I cannot forget. I mean, I was traveling in Jharkhand in the deep interior areas, and I was interacting with a group of vulnerable tribal groups which are on the verge of extinction. See, he said, साहब हमको यहाँ पे, वो अपनी गोंडी भाषा में बोल रहा था, वो हमको ट्रांसलेट किया जा रहा था कि साहब हमको एक बस अस्पताल चाहिए और स्कूल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और उसने ये कहा कि साहब जब कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो हम लोग उसको चारपाई पे लिटा के अस्पताल ले जाते हैं। कभी कभी चलते चलते रात को शाम हो जाती है, कहीं गांव में रुकना पड़ता है, फिर दूसरे दिन फिर चलते हैं, फिर दूसरे दिन शाम को पहुंचते हैं, और जब तक पहुंचते हैं तब तक वो आदमी मर जाता है। दिस वाज द डिस्क्रिप्शन विच रियली शुक में, कि मतलब 2 दिन अस्पताल पहुंचने में लगता है और तब तक आदमी मर जाता है। दे वांट सिंपल फैसिलिटीज, कि एक अस्पताल खुल जाए, एक स्कूल खुल जाए। ना टू मच ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दोज एरियाज विल डिस्ट्रॉय द ट्राइबल वे ऑफ लाइफ। आई थिंक वी नीड टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन द टू। Excessive development may turn out to be counterproductive. Another thing which we have to take care of, that the corporate groups, the way they establish themselves, does not result in deforestation and large scale alienation of land. You talked of land grabbing. Land grabbing takes place in the hinterland states. In these tribal areas, what happens is land alienation. Land is taken over by the government to be given over to a certain corporate group for establishing a steel plant or a factory or a power plant or whatever it is. Now, land alienation is a very serious problem. Planning Commission earlier used to, I remember, publish yearly figures of land alienated and land recovered from those who had taken over. Yeah. And there was always a huge gap. Land alienation was far more than the land recovered. Now, these figures are no longer published because I think these figures are very inconvenient. So these figures are not published. But land alienation, but figures of deforestation are still available. I mean, I don't have readily available, but deforestation is a continuing process. And this is also to be taken care of. Why can't these data be made public? For example, why can't this data be, because, for example, a couple of years, 2-3 years back, when the Baramulla train link was being established, when the Baramulla train link was being established or being constructed, a lot of orchards were displaced. And there was a lot of hue and cry covered by the Kashmir Times on this, saying that the compensations were not relevant, they were not adequate. Now, there was no data to back such claims. Yes, the media was, trying to play around those kind of criticisms, and ultimately the government can tom-tom about its, in achievement. But at the end of the day, there have been reports of thousands and thousands of families in the Upper Srinagar area, the Muzaffarabad and Shahibabad areas, which have been displaced. The orchards have been ruined. We have General Huda. He worked on an operation called Operation Sadbhavna. We've also been joined by K.S. Singh, Consul Himalaya Singh. But before I get into those issues, we've got Shishti Vasudev with us. Shishti Vasudev would know. Uncle, I think you'll have to leave. Any other further points that you have? No, thank you very much for all the Uncle, time. so kind of you. Thank you so much. Thank you. Namaskar. Shishtipal Vasudev with us. Shishtipal Vasudev, he's stopped in the highway. He's traveling to Qatar just because of this important issue. Vasudev ji, former PCC of Himachal Pradesh and also former Additional Secretary Home, and I think he's donned many colors. Naxalism, tribal forest development, cost of development. Over to you, Shishtipal Vasudev. वासु भाई अपने मोबाइल ऑन कर वो कर लीजिए, वीडियो ऑडियो ऑफ है आपका, ऑडियो ऑफ है वासुदेव जी, ऑडियो ऑफ है. The problem of Naxalism basically came about 2-3 decades back because of the poverty, not catering to the rights of people living in deep forest areas in Jharkhand, Bihar, Odisha, West Bengal,
MP, Chhattisgarh, Andhra Pradesh. So the solution found was that we should first cater to their rights and concessions. Whatever rights, one of the causative factor was not catering to their forest rights. Forest rights were granted to them under forest settlements carried out by monarchs of kings of this area, subsequently by British, and now they have uh, they have been granted under Forest Right Act. So trigger factor and causative factor of there were many other factors was not catering to the rights of the people, forest rights of the people. They were living in forest areas and exploitation was being done by people outside. So now through hard, strict measures, government has been able to control the menace nationalism in most of these areas. Now, taking the issue further, government has enacted Forest Rights Act. Wherever the forest rights were not granted, they are being granted and mostly have been granted. Thirdly, forest people having got rights have now got privilege. Government has come out with a Prime Minister One Dhan Yojana, where minimum support price for the forest produce, especially NTFEs, have been fixed, and these can be sold to the public sector undertakings of state government and government of India. So the solution, the, the causes of nationalism have been dealt with. Poverty-ridden farmers, poverty-ridden people have been given trying to be given employment through various schemes. Their rights have been settled. They can now sell the forest produce available in large number of quantities in these areas. So to take the issue further, we need to go for value addition that will give them more employment, but through small industries, not through big industries. MSMEs should be brought out there, making local people empowered and giving loans to them instead of outer people going there. I think we will be able to win, reduce poverty there, cater to their rights, give them lot of capital, allow them facilitate their earnings, allow them to set up industries. I think these way satisfied tribal people, satisfied local people, satisfied rural people, they will then go fully away from the problem of nationalism in future. Thank you. Vasudev ji, all the guests, we've got 10 minutes more. So quickly we'll keep bringing the guests one by one. Abhay Gupta just messaged me. Yes, Bhaskar Jati Mahanta ji has raised his hand. Yes, former DGP Assam ji, please tell us. Both the speakers just before about nationalism, it's very important to pull the rug from the beneath the feet of these Naxals or the insurgents, whatever the case may be. As far as Assam is concerned, uh, we did similar kind of a thing in respect of the nascent Naxals who have come in here in Assam. Right in the nip, we have nipped them in the bud right at the beginning as they were forming the lead committees, etc. We went all out towards their constituencies and ensured that nothing happens, and whole lot of them got killed, and they were basically branded as Ulfa, but then they were actually Naxals. And the nature of Naxalism in Assam and Northeast is different. Like the PLA, People's Liberation Army in Manipur, they are essentially Marxist Leninists, and they take their cue from the Chinese. They're very Maoist in their approach, and their behavior is not like the Naxals in Bastar or Chhattisgarh or wherever. So mainland India, their quality of offense and then organization is very different. Anyway, we nipped them in the bud by way of ensuring the carpet from beneath their feet had been pulled. Thereby, I'm meaning that the constituency's requirements were addressed. The same was the case in respect of Ulfa and the other insurgents during 2019 to 2022, 23. We have closed all the terror shops in Assam, like, the Boru insurgency got over, the Hill insurgency got over.
And Ulfa is almost on the verge of, closure right now. And this is basically in addition to the police effort. We have absolutely ensured that we went into the heart of the people. We didn't do psychological operations. So-called psyops is a terminology I'm averse to, basically because people see through you. If you pull people from the villages and do their medical camps, zabardasti mein, then they understand that you are doing it with a purpose to elicit information from them. So that doesn't really help. You really need to do it all your heart. 12 to 1,204 children whose fathers have been killed in extremist violence. And we looked after their education over a period of right from 2001 till now. It's still on. The children have become doctors now who we adopted right from the film that you have seen, The Rebellion Bejeweled. Here is a case of a particular Ulfa character who we tapped right inside the jail, and then he had put jewelry in the name Rebellion. So, by way of going towards community, he has done his rebellion against injustice. He has indulged in rebellion against, poverty. And he actually has gone into the people, and with the help of a whole lot of corporates, all right, we also ensured, especially Oil India Limited really helped. In respect of the CSR that you had mentioned, of late, what we noticed is that though people want to do a lot of good things, the community itself comes up. The corporates nowadays need recommendations from high and mighty. Like the politicians have to give you, okay, then only the corporates give you some CSR. Otherwise, they'll throw doles like 1 lakh rupees, and they won't really go out unless it is recommended by some honorable ministers or some big people like the central minister. Though I have had 250 odd services people try with my forum, but very rarely we come across such candid confessions from former DGP. This is what I have noticed basically because here in Majuli, the missing tribe, they took weapons and 8 of them had gone into the NSCN camps in Hebron. They wanted to take up weapons and start another outfit. So I have requested all the operating forces. I was law and order IGP, law and order for 4 years in Assam. I have said, give me an opportunity to find out why these kids are taking weapons, because it was very odd that the missing tribes are taking weapons against the state. Then I found that there was a social divide among the missings and the local Vaishnavite monasteries, etc. So in the cultural practices that take place in the nearby villages of the Assamese speaking people, they do not give part to the missings. So this hiatus has been taken advantage by the Christian missionaries. The entire Christian missionaries had come big time, had helped, given a whole lot of doles, like, schools, they have set up hospitals, and they would give mosquito nets and doles like that to these people, and they have attracted them towards Christianity. That's when these people have taken weapons, and I had gone there. I asked for some time before deploying a company of CRPF there. I said, let's not put CRPF right now, because for putting up a force there will cause more hiatus, more alienation on the part of these tribes. So I interacted personally with these youngsters of the missing community and their oldies said, and their forefathers have been watching the practices, cultural practices right next door, right in the neighborhood of Assamese speaking people, never have been given an opportunity to take part. So I had started an organization that time called Srimanta Foundation, through which we have introduced the system of bhavana. The Srimant Shankardev, 15th century saint, he had introduced this drama called bhavana, Natya Shastra based, dramatic performances wherein, beautiful things are done, and they wanted to be a part of it. So we translated the literature of Srimad Shankardev ji. We translated the literature of the other apostles into missing language. We made them do bhavana.
We said, you don't need to take up weapons. Come, learn these things. And we ended up setting up 3 schools out there. Later, it has become our non-police project. It is still going on, but then we do not get help from the corporates in terms of, unless it is recommended by some central minister, etc. These are the problems we are facing. Otherwise, yes, there is Okay. no missing tribes have not joined those groups, and we have also advocated very fiercely among the Satra institutions, among the Vaishnavite monasteries. We said, come on, they are your brothers. You must take them into your fold. Srimad Shankardeva's, philosophy was so very inclusive. It would take the entire people together in its fold. So you do it yourself. Nowadays, things are much better. Yeah. Thank you. Mahantaji, just 8 more minutes. Please stay with us before you leave. I'll call quickly Major General Abhay Gupta. This is an opportunity. Also, people don't realize what kind of people we see. Abhay Gupta. Major General Abhay Gupta is the one who was leading the NSG operations in 2611. Sandeep Unikrishnan, Major Saab, won the Ashok Chakra under his leadership. Major General Abhay Gupta is a man of few words, but he's got vast experience. I do not know about Northeast, but yes, he's got vast experience about handling and policy suggestions, which he was speaking to me a couple of days back. Over to you, Major General Abhay Gupta. Thank you, Amitji, and thank you to all the members who have joined in the forum. We have focused on the financial aspects of this region and the population. The last speaker also focused on social divides. I would like to just focus first on the rainbow part. For a rainbow, you need the right environment. If the moisture content is not there, you don't get a rainbow. Similarly, for all this to happen, you need to continue your security environment. Now, in such situations, first there is euphoria. We have done it. Then there is complacency. And it is slow complacency which leads to reintroduction of these elements again, regerminating of such elements. General Hooda would also be better versed with it. In Kashmir Valley, when certain areas became, terrorist-free more or less, the grid of security forces was changed. And we kept saying that please don't do it, you are diluting it too much. But nobody listens. And then after another 2-3 years, not even 2-3 years, a few months, it again developed. I went in the initial operations in Punjab. I was in charge, my brigade was in charge, I was the brigade major. We had caught a number of suspected people who had affiliation with terrorists. We were withdrawn. 90% of those people were released. Again, after Mrs. Gandhi's, Indira Gandhi's assassination, we went back. And of those 90%, at least 70-80% had become active terrorists. So my point is that this sense of euphoria leads to अरे सब खत्म हो गया अब तो कोई जरूरत नहीं है. And security, unfortunately, does not end up showing dividends which are visible. They end up creating that environment, and just like today the world is crying about environment, pollution, etc. If you just draw an analogy, the terrorism, the Naxal and the other concepts are that kind of pollution in the security environment. So my first and major point is at no time we should dilute this grid because thinking that it's a wasteful effort of the force, and every force is tight for troops. So the senior leaders in the forces will also want to pull out. This was the first point. Connected with this is the intelligence setup. Now when rehabilitation is going on, it is better to put in intelligence right at the village level itself. And intelligence does not require very trained people, a little financial incentive, a little other help, and then you can create a very strong intelligence grid which will feed you timely information and help you to stamp out
any re-germination of these things. The third point I would like to make is very rightly brought out the problem of medical and education, and unfortunately, we see the Christian societies using it in all such areas, and they are thriving. We have the scheme of footpath. I mean that nursing staff, which goes from village to village. That scheme is going on in our country. I'm forgetting the exact name of it. So that kind of a thing. Then the ambulance service, vehicle-based medical teams. Now in Srinagar, I was BGS during 2003-2004. That is the Brigadier General Staff, and we started ambulance services, medical services. We incorporated the civil doctors from the government, gave them ambulances. Ambulances were bought, they were given equipment, they were given staff, and they would go and reach out into these interior areas. And once the population there got timely medical aid and lives were saved, automatically their loyalty started changing. So my point here is that there are ongoing schemes. It is already financed. It's only how we work it. It's a question of the outreach and going there. And the last point I want to make is, just like our skin has many layers, this whole issue has many layers. There is the political layer, there is the financial layer, there is the social layer, which at panchayat level also needs to be sorted out. There is the security layer, there is the intelligence layer, and many more layers. So let us try and create systems which make all these layers try and work with synergy. So thank you so much for inviting me and giving me this General support. sir, we've got please 3, 4, 5 more minutes. We've got General Huda with us. He is somebody who, as Bhaskar Jati Mantaji was talking about, the northeastern landscape of terror being different from the red terror zones. General Huda is not only an acclaimed son of the soil because of the surgical strikes leadership, something which the country will be proud of for the next 50 years, if not more. General Huda has also worked extensively in the Northeast. And he captured one of the royal families from Mizoram, Manipur or Mizoram. And it was an inter-country operation, transnational operation with Bangladesh, using NIA and everybody. Before you take us through that small episode, what is the difference, General Huda? Because you've served in the Northeast, you served in Jammu Kashmir. What is the difference between insurgency and terror? So basically, Amit, terrorism is basically an idea that by carrying out violent actions, you terrorize the people. And that is the whole aim, that, using violence and terror as an instrument to tell people that, the government is dysfunctional and that we are able to do this. I think if you look at insurgency in a larger context, it has a more popular support, a genuine popular support of the people, which is why, as everybody said, insurgents are like fish who can't survive without water. So there is popular support. In some ways, terrorism is easier to handle because it requires primarily a security, and as General Abhay Gupta has brought out, good intelligence network that you are able to deal with these people. Terrorists don't really have support, large scale support among the people. Insurgencies are much more difficult to handle, and I just want to flag 4-5 issues which I think you also mentioned. We need a very holistic kind of approach to deal with insurgencies. One, of course, is security, and that seems to be the larger sort of focus of bringing the security situation under control, which I think we have been successful in doing. Whether you look at the Maoist areas, look at J&K, look even at the Northeast. But it also needs to be combined with some other strands. The first strand is political and aspirational. Why have insurgency in the Northeast we have succeeded? Apart from a security approach, we also looked at the aspirations of various tribals. We created autonomous councils. After independence, we created states.
which was the people's demand. We created autonomous councils that tribal aspirations were that, we are being left out of the development scheme. So we created these autonomous councils. That gave them political empowerment. That gave them economic empowerment. That is how we dealt with tribal communities. And so this political aspiration of the people needs to be met. The other thing which everybody's talked about is development. Of course, everybody needs to feel if India is growing, they are a part of this community and this country. And so the development must happen. Tribal rights, economic opportunities, job opportunities, these must come. Also alongside, making sure that the security forces are successful. And there is also another strand, Amit, which has come up today, which is the informational strand. How are we handling information? What are the narratives that are flowing around? So recently, I think yesterday, I was reading in the papers, some of the local politicians in Jammu and Kashmir are saying, "Oh, the government wants our land; it doesn't want the people." These are kind of narratives that are happening, and I think we have to fight this war of the narratives. Why are people feeling that the state is not for us? Is that real? Is that only being brought out by some people? Divisive narratives of dividing societies. These people are not good. These people are. These people are anti-national. I think this is one area that we need to look at and deal. Because General Huda, what is the root cause? Because you were in Northern Command, you were the GOC Northern Command. For example, I go back to 80s, General Singh Bhindranwala. This huge Punjab revolution around Khalistan, other things. But Subramaniam Swamy went and stayed with him in the Harmandir Sahib and came out calling him a saint. What is it? So that's what I'm saying. See, the narratives that grow around people. So look at, for example, in Jammu Kashmir, Burhan Wani, right? Became so famous. This guy didn't have a single civil case against him. What has happened today with the social media is that they are able to create powerful images. And so after he was killed, I mean, it led to the most massive of protests that we have seen in Kashmir. Therefore, I'm saying we need to deal with these narratives. I think we need to be careful about what we do, how we project things. We are seeing now very divisive narratives that are happening, trying to divide class and society. Take us through that anecdote of your capturing that royal family Skyen. No, that was R.K. Megan who was in charge of the UNLF. I mean, it's a bit of a secretive story, but the thing was that through a series of cyber operations, we managed to track his emails. Through those emails, we were able to identify his whole network. In fact, the whole UNLF network, which was based in Nepal, Bangladesh, South Assam, Manipur, was captured. Megan himself was in Dhaka. And so we did an operation with the NIA. The Home Secretary, Mr. Pillai, at that time, was instrumental in bringing, I spoke to him, and he was instrumental in bringing the NIA. If you recall, the NIA didn't have any office in the Northeast, then they set up an office in Guwahati. We worked with them to roll up the network within, and then we worked with the RNAW. We identified the house where Megan was living, and so over a period of time, we managed to roll up that network. So that also, intelligence is key. So we can keep killing the foot soldiers, but they keep getting revived. We need to look at how to get the leadership. Yes, Abhay Gupta, Major That is General Abhay critical. Gupta laid the prologue on this, the premise around this, that the security kavach needs to be kept intact so that development can start, prospering internally. Before I bring the final valedictory, note from Professor, most hugely erudite Professor Iyer, Bhaskar Mahanta ji, are you there? Yes, yes. Anup Chetia was on a show with me couple of years back, post his surrender, the Alpha Commander. He met me, we spoke, we had a good time together. But then what has been the development? Because in the last 2 years, could you just take us through some successful examples which could be replicated in the Naxal zones which have been eradicated of the Red Terror?
Naxal zones, Indian nation has really shown itself. They have defeated the Naxalism. It is almost in the verge of final closure. So, but then, yes, as mentioned by the honorable generals, we shouldn't be sitting on accolades only. We must keep our security apparatus absolutely alert and watchful, like a hawk all the time on the situation so that it doesn't again go back. Going back can happen if the negative things, like which was mentioned by Mr. Prakash Singh, like, corporates piling on, land alienation and deforestations, deprivation, and perception of deprivation on the part of those constituencies of these insurgents or Naxals must be done away with actually. So there ought to be a real, genuine intervention, which has been of late appearing to be taking place with a vigor. Absolutely, this realization has happened finally, thankfully, with the political brasses. It's not that merely by some bureaucratic or police or army intervention. Yes, the security apparatus can contain it to an extent. After that, whatever has been arrived at, whatever understanding has been arrived at, has to be really implemented in letter and spirit. For example, the Boru Accord. The Boru Accord, which was signed, finally, it has been actually implemented. The police, on our part, we had really insisted wherever there was a gap, the implementation wasn't taking place. We went whole hog. We gave a lot of pressure on the civilian administration and asking them, here is a provision which is not being implemented, and now they are being implemented in absolute full scale, and accordingly, the need for taking up weapons have disappeared on the part of these Boru tribes. Now, development has really come about. Similarly, the Karbi Anglong. Yeah, there are issues, all right, in the Karbi Anglong, but the administration of weapons has gone down. But what is very important, the takeaway, Rajkumar McCann was mentioned, but UNLF has not played a very good role during the recent Manipur crisis. Not only UNLF, talk about PRIPAC, talk about PLA, talk about the Meitei groups. 5,000 weapons were looted from police armory in a couple of days. It's not a joke. And not even 1/4 of them have been recovered so far. And they're still lying with, incidents of all kinds, be it Meitei, be it cookies. Now, administration of ceasefire administration. This is something very important. The insurgents are called for truce, called for discussion, negotiation. During this intervening period, where are the weapons being kept? Weapons are kept initially kept with the insurgents themselves because they don't want to call it a surrender. They want to call it a respectful negotiation with government of India, and accordingly, they retain the weapons. There is an SOP which is generally signed for the heck of signing, but then this SOP is so weak that the command over the existing weapons by the insurgents themselves, who are supposed to be in negotiation, continue to remain with the insurgency. This is not something Indian nation must do. It must take away the weapons in the first place. Otherwise, weapons at the disposal of these insurgents groups, even if they are in negotiation with the government of India, must be, in sooner or later, brought to the custody of the state, and then only these kind of things like whatever happened in Manipur would not happen. And we brought out a paper on this particular aspect, and I believe now it is also being looked at very seriously by all and sundry. Out here in Assam, I think this is a very major takeaway that, holding of weapons by the insurgents or by the Naxals must not be allowed. This must be really administered and ensured. Yes, thank you. Thank you, Mr. Mahanta. Final remarks, closing remarks, 3 minutes to 5 minutes for Professor A.G. Iyer. Yeah, see, I could not
last time talk about one issue which was to be talked to the minister, honorable minister, ex-minister Pagan Kulaste Sahab, and that is related to land acquisition. Now, why land has to be given away to a private sector company? It should not be given away. And we brought this law in Pavagada Solar 2050 megawatt, where land is not given away. Land remains with the farmer in the land bank enterprise, and they become shareholders at some 21,000 rupees per acre. That was the price at that time when 2018 this project was commissioned, largest solar project in India. So why do not we learn from what has happened? Why again and again go back to acquisition of land? So this has to stop, number one. One of the main reasons for nationalism or any other protest that happened locally is this, because you take away land from, and that displaces the top member of the family. And then his sons and daughters and all the then want the share of their booty from the land. They will ask him to sell it and send that man to either old age home or he will be left in penury. So we are actually finishing the person who has the land ownership in this whole system. This is the first thing that has to be stopped, to really stop all these activities of anti-state or becoming anti-state or nationalism. If you take away what they have, then there is nothing left for them other than to come back and fight it. So this is the first thing. And I have my own experience at Larsen Toubro Tadpatri facility in the late 90s, roughly the 96, 97 range, when I put two 12 megawatt engines of MAN to power the 1 million ton project there, 25 megawatt power plant, which was a cement plant called the Ultratech Cement. Ultratech name was never with the builders. It was the L&T cement division that brought this first 1 million ton per annum plant in the location called Tadpatri, which is nearer to the Kurnool district. And that was a brilliant plant commissioned without the grid. There was no electricity grid. What happened is it was a complete axle belt. From starting from, we had to go Indian Airlines and travel from literally Bangalore to on the Hyderabad highway and then go via Penikunda and Puttaparthi into Tadpatri. That was a very dangerous belt. Traveling at night used to be a terror. I was 2 times taken over by Naxalite, and I don't know how they left me. They didn't do anything to me because they found that it's a project in charge and things like that, and nothing to do with the government. So they left me. But why they were doing this? Local commissioners and all spoke to me. This all happened because there was acute poverty there. And then that time K. Venkatraman was known to me, and when I talked to him later, the L&T, although L&T lost this holding because they had to sell this off in a hostile takeover to the Birla Group, and Rajshri Birla tried a hostile takeover of L&T Group. That time this was given away, and Gurumurthy gave them an idea why you want to take this over. It's a manufacturing company, you have no link, you take over the commodity, and that was the compromise. It was sold off, Ultratech was sold off to the Birlas and became Grasim. But what in an interview, K. Venkatraman, the great man KV, because I never liked AM Naik, KV was a real man inside that. And KV told me, Iyer Saab, projects build a nation. And therefore, that's a true wording. You need good companies like Larsen Toubro or Shapurji Polanji and other companies to come up than just depending on only 1 or 2 top businessmen of India. Because if you do that, you will have a different kind of a problem locally, because the land and other acquisition happen with lot of might, lot of political corporate crony nexus, and this has to stop. Apart from land, any other important issue? See, other issues are basically, people need engagement. Why people fight? They need engagement. I'll give you nearby Maharashtra, near my place, it's a very good plant project which was done, which is called the Ghatgar project, 250 megawatt Ghatgar project. It was the first roller compacted concrete hydropower plant in Asia, not the world, but in Asia. Even the China. Got the point. Even skill development, will fail. No, I'm telling you what happened. The people around it were not getting electricity and water. I wrote this to Sushil Kumar Shinde ji after visiting that project. And to the credit of that man, he said, Iyer Saab, we will ensure that at least jo aap 6 se 10 kilometer dur bol rahe, all the people receive water and electricity. Because after people have given the land, if they don't get their water and electricity also, you can imagine how they will be in favor of your project. So this was an example that it was done. And now also they are getting decent electricity, low cost, and it is being told to the DISCOM that never to overcharge them. And water supply also, local
the Gram Panchayat and municipal corporation behind. They ensure the water goes from nearby Barvi dams and other sources. So this is a case study, perfect example. When it was missed by the government, but we brought it out and it happened. Thank you, Iyer sir. So I think kind of people, see, removing Naxalism today, it is only temporary. Something else will take over. So is the government vigilant on that? I'll give you one more example. Amit Shah ji did a good deal on the Bodoland. This thing is a kind of an autonomy for them. But what has happened? The entire 750 crores has not been spent. Nothing has happened there. 750 crores were allocated, but no expenditure. Nothing was done because they had no expertise. The Bodoland territory region had no expertise, and the experts who were trying to be brought in did not want to do anything there. So this money will go back in the budget. I think Bhaskar Mahanta ji also spoke about it when he said, implementing it is the most important thing. So thank you all, gentlemen. It was a fantastic discussion today. We had various issues discussed, but as I said, it's all about a secure future, without which all these deliberations, policy initiatives, working in silos will ultimately lead to only one final stage, the stage we all call deja vu. So if you want to avoid it, let's be on our toes and start enacting solutions on the field. And money is where it all starts, and money is where it all ends. Thank you.